What is power? How do we create it? Can an enclosed boundary hold an infinite power? Delhi, the heart of India and the land of sultans. The city, wrapped in the spoon of silver, waiting to be unwrapped by the eye of the soul finder, wanting it to be rediscovered. Through ages, the city has survived many generations, but now it tends to lose its charm. Such is our sight, a true gem lost in the fake glitter of the modern world, hidden under the depth of ignorance, once traversed the most, but now unfortunately neglected, creating a true sense of liminality. A park where even inhabitants are unaware of the fact that the site is the palace of Coronation. Unlike rest of the spaces created during the British Raj, the site, which held an intangible power to radiate the coronation of the world's strongest ruler, King George V, is now just a transitional space. Coronation Memorial. Well, the name speaks for itself. This 56-acre park, located in the northern part of Delhi, constructed in around 1850, was the venue for the Delhi Darbar of 1877. It had once held power to flourish 3 coronations, also making Delhi the capital of present-day India. It also has various statues of dignitaries located from all corners of Delhi. In the absence of proper maintenance and security arrangements, the site and statues have fallen prey to vandals and were scribbled with graffiti. The lake, which was created to enhance the park's attraction, lies dry. Coronation Park was earlier under CPWD. However, land was then transferred to DDA. काफ़ी पहले 2 बार आया था यहाँ पे और उस टाइम आई थिंक ये पार्क बन रहा था। बहुत ज़्यादा लोग इस पार्क को आई थिंक जानते हो ना जानते, बट क्या इसकी हिस्ट्री है एग्जैक्ट जैसा कि है, काफ़ी इसका महत्व नहीं था उस टाइम। उसके बाद जब यहाँ पे नए तरीके से पूरा इनोवेशन किया गया था, इसको बनाया गया था, उसके बाद से पब्लिक यहाँ थोड़ा आना स्टार्ट हुई। लेकिन एग्जैक्ट क्या यहाँ की हिस्ट्री है आई थिंक किसी को नहीं पता। आने वाले टाइम में भी अगर कोई बताना चाहे तो लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी आज पहली बार ये स्टोरी पता चली और काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं वाकई में कोरोनेशन पार्क इसलिए फेमस है। मतलब मैं यहाँ पे अभी 1.5 साल से रील लगाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी अच्छे भी आते हैं और ख़राब भी लड़के आते हैं। किसी पीछे हो गया जाके इधर बैठते उठते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चर्च लोग आते हैं।